learn how to change direct speech into indirect speech. Here, how to change direct speech into indirect speech? Here I read a sentence. He says to me, I do it. देखिए, किसी सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने समय इस सेंटेंस में जो डायरेक्ट स्पीच है, इस सेंटेंस के टू पार्ट्स हैं. पहला पार्ट है रिपोर्टिंग स्पीच एंड दूसरा पार्ट जो है वो रिपोर्टेड स्पीच. ठीक है, यानी कैसे पहचानेंगे कि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग स्पीच क्या है? रिपोर्टेड स्पीच यानी किसी सेंटेंस में डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हो तो वो सेंटेंस क्या कहलाएगा? रिपोर्टेड स्पीच. और जो सेंटेंस डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा हो उस सेंटेंस को हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं. रूल नंबर फर्स्ट है कि यदि किसी रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, तो उस स्पीच को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते. रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है. ठीक है, चलिए यहां पे देखते हैं इस सेंटेंस को हम चेंज कर देंगे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच. इस सेंटेंस में जो ही सेज है, इस सेज वर्ड से हमें क्या पता चलता है कि ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो प्रेजेंट टेंस में है. सेज वर्ड से हमें पता चलता है कि जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो प्रेजेंट टेंस में है. जब रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस में से या विल से या सेल से वर्ड आ जाए तो हम पहचान जाएंगे कि वो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है. तो हमें क्या करना है कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करना है जब हम रिपोर्टिंग स्पीच और डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय. देखिए, तो हमारा सेंटेंस क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच. ही सेज टू मी. हियर इस सेंटेंस में सेज हमारा क्या है? प्रेजेंट में है. इसलिए हम क्या करेंगे इस सेंटेंस को? ही tells me that he does it. देखिए, इस सेंटेंस में रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस में टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं किया, लेकिन जो फर्स्ट पर्सन की प्रोनाउन है वो क्या हो गए? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के प्रोनाउन के अनुसार चेंज हो गए. यानी रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है? ही. तो रिपोर्टेड स्पीच की प्रोनाउन क्या है? फर्स्ट पर्सन. तो फर्स्ट पर्सन की प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के प्रोनाउन के अनुसार ही चेंज हो गया. ठीक है, या अगर नेक्स्ट रूल में देखते हैं. यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस
डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को फॉलोइंग वे में चेंज कर देते हैं। डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए डायरेक्ट स्पीच में यदि से या सेज हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में से या सेज ही रहेगा। लेकिन से या सेज के बाद टू लगा हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में से टेल या टेल्स में चेंज कर देते हैं। सेड हो तो सेड ही रहता है। लेकिन सेड टू हो तो उसे टोल्ड में चेंज कर देते हैं। Will या said से हो तो नो चेंज होता है। will या said से ही रहता है। लेकिन will said से टू हो तो will said टेल में चेंज हो जाता है। एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि लिखा है he says to her I am your brother। अब इस सेंटेंस में क्या लगा हुआ है? टू लगा हुआ है। says टू लगा हुआ है। सेंटेंस क्या है? असर्टिव सेंटेंस में है। इस सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय says टू को किस में चेंज कर दिए? says टू चेंज हो गया टेल्स में। says टू चेंज इनटू टेल्स। he tells her that he is her brother। एक और एग्जांपल देखते हैं। he says I am a good boy। I am a good boy। अब इस सेंटेंस में साइड में करते समय क्या ये प्रेजेंट में है? इसके ऑब्जेक्ट में कुछ भी नहीं है। he says that he is a good boy। इस तरह से हम क्या करेंगे? डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय इस रूल को फॉलो करेंगे। We will meet to you in next video। Okay, thank you for watching this video। Please share this video to